Okay, let's start with tetracycline. So this is our first um, protein synthesis inhibitor. Mashallah, we've done cell wall synthesis inhibitors. Ab hum log aa gaye protein synthesis inhibitors. Before that, it's obvious from the name कि it's made up of 4 cyclic rings, 1 2 3 4. But इसके अंदर a point to note is that alterations in any of the rings causes changes in the thermodynamics या pharmacokinetics. तो अगर इनमें से किसी भी रिंग में alteration आ गई तो that's what accounts for the different effects and all of that. मैं इस तरह कर देती हूँ. Okay, is this better? I feel this is better. Okay. तो इसके अंदर हमारे पास टेट्रा anything basically ending with cycline. So we have tetracycline, minocycline and doxycycline, the 3 most important ones. और एक में से dimeclocycline भी है, which you can remember. But tetracycline, minocycline and doxycycline are the most important types. And इसकी class जो है it's protein synthesis inhibitors. अच्छा, formerly हमने जितने भी cell wall synthesis inhibitors पढ़े हैं, I think if I'm not wrong, all of them have been bactericidal, यानी they just kill the bacteria. However, in protein synthesis inhibitors कुछ bacteriostatic है, कुछ bactericidal है. Bacteriostatic वो हैं जो कि बैक्टीरिया के growth curve को रोक देते हैं, और that's like obvious from the static, and they don't really kill the bacteria. So tetracycline is bacteriostatic, so I think this is a point to remember. Acha, coming to its mechanism of action, so this inhibits translation. Oh my god, I messed it up. Translation in ribosomes. ठीक है, तो what part of protein synthesis does it inhibit? It inhibits translation. Translation ribosomes में होती है, जिसके अंदर एक 50s सब यूनिट होता है, एक 30s सब यूनिट होता है. अब बाकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स इस चीज़ पे भी डिफ्रेंशिएट होता है कि कौन सा किस सब ग्रुप को सॉरी किस सब यूनिट को अफेक्ट करता है. तो जो टेट्रासाइक्लिन है ये 30s को अफेक्ट करता है. आई वुडंट से इनहिबिट डायरेक्टली. तो 30s पे mRNA बाउंड होता है, और इसका पहला स्टेप ये होता है कि बाहर से tRNA आता है, अपने साथ अमाइनो एसिड उसने लगाया हुआ होता है, वो आके 30s पे बाइंड करता है और फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है एट इट्स लिटिल रिसेप्टर हियर. बट व्हाट टेट्रासाइक्लिन डज इज इट गेट्स बाउंड टू दिस receptor that was meant for tRNA, and that's how it just inhibits translation. जब tRNA नहीं आएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी. ठीक है, so it works by binding to the tRNA receptor on the 30s subunit of the ribosome during translation of protein synthesis. Okay, now coming to pharmacokinetics. तो this is इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है कि जो ओरली और आईवी दोनों दे सकते हैं, बट इट्स ओरल इफेक्टिवनेस इज़ अ लॉट एज़ कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स. तो इसके अंदर ओरली हम टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, माइनोसाइक्लिन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, जबकि आईवी हम लोग सिर्फ मिनी डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं. टेट्रा हम लोग स्ट्रिक्टली ओरल देंगे, और इसके अंदर एक और रूल है कि यू हैव टू गिव इट ऑन एन एम्प्टी स्टमक. यू कैन नॉट गिव टेट्रासाइक्लिन विद फूड. ठीक है, अब इसके अंदर another point, very important point to remember is that इनमें से जो कोई भी है ना, tetracycline, minocycline, doxycycline, you don't give it with milk or antacids or iron supplements, magnesium supplements or calcium supplements, because tetracycline is a chelator. तो वो basically इसके साथ bound हो जाएगा, खुद ज़ाया हो जाएगा, इसका कोई effect नहीं होगा, क्योंकि it will just like bind to either of these cations and it will get excreted without having its effect. तो you avoid it with these sort of foods. ठीक है, इसके अलावा another very important point to remember is that they're tetracycline, minocycline और जो dimeclocycline, they're eliminated by kidneys. But जो doxycycline है, this is eliminated in the feces, in the bile. तो people with renal insufficiency, उनको आप लोग doxycycline दोगे, because that is not processed by the kidney, so it's safe to give there. Lastly, इसके अंदर जो resistance है, that will be formed by altering the bacteria will either alter its ribosomes ताकि this binds the tRNA of the ribosomes. If it doesn't have a suitable ribosome to fix on, it won't have an effect. Or secondly, another important point for resistance is this is basically a concentration dependent drug. ठीक है, तो ये सेल के अंदर अपनी concentration ज़्यादा करता है in order to have an effect. तो if there is an active efflux pump that constantly keeps like shunting it out of the cell, shunting the tetracycline out of the cell, so it won't have its effect. That's why you use like an efflux pump for this.
ओके, दैट्स दैट कवर्ड. ओके ठीक है, अब इसके स्पेक्ट्रम पे आते हैं, विच इज़ दिस इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. लेकिन इसकी जो हम लोग इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस याद रखेंगे वो बेसिकली जो एटिपिकल, मुश्किल, या फिर द सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया दैट आर नॉट रियली mentioned, that have not been mentioned so far, you're a bit unique or atypical in some way or another. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं on outdoor diseases, which include diseases acquired from ticks and zoonotic infections. तो tetracycline can be used for like gram positives, gram negative, aerobe spirochetes, लेकिन हम लोग सिर्फ इन पे फोकस करते हैं because these are unique to tetracyclines. तो इसके अंदर it is used for zoonotic infections such as brucellosis, plague, francisella. It's also used by rickettsial infections. Rickettsia basically हमारे पास ticks के through transmit होते हैं, arthropods के through. ठीक है, rickettsial जो bacteria होते हैं. तो these mostly cause Lyme disease and Rocky Mountain spotted fever. इसके अंदर हमारे पास myalgia होता है, रैश होता है और फीवर होता है. ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं. तो these sort of diseases, they're treated by tetracyclines, and to be very very specific, they're treated by doxycycline. ठीक है, अब इसके अलावा it's also used for treating venereal diseases, which are basically just like stuff that has to do with your private parts. Or it's like the so we were the preferred drug or the first line drug against like chlamydia. ठीक है, तो मैं लिख भी लेती हूँ chlamydia. तो क्लेमिडियल यूरेथ्राइटिस, क्लेमिडियल सर्विकाइटिस, क्लेमिडियल PID, इन सब के ख़िलाफ़ यूज़ होता है. अब क्लेमिडिया से अगर हम याद करें, आगे जाएं, तो क्लेमिडिया इज़ ऑल्सो दिस इज़ वेयर डॉक्सीसाइक्लिन की स्पेसिफिसिटी एंड्स. ठीक है, ओके, सो क्लेमिडिया इज़ ऑल्सो कॉजेज एटिपिकल निमोनिया. तो टेट्रासाइक्लिन इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर दैट. And another cause of atypical pneumonia is mycoplasma. It's in the word, right? Atypical. We already talked about how it's used for atypical stuff. So atypical pneumonia, chlamydia, mycoplasma, and it's also used for community acquired pneumonia. ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी जनरल चीज़ें आ जाती हैं. It's also used for anaerobic bacteria that cause acne. It's used in H. pylori infections, and it's also used in MRSA. It's not first line, but it can be used in MRSA. ठीक है, इसके अंदर भी एक और चीज़ है कि जो स्पेसिफिकली मिनोसाइक्लिन है, that is used in meningococcal carrier states. अच्छा, अब इसके अंदर an important point to note is that tetracyclines have a very very big volume of distribution. ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन हर टिश्यू को पेनिट्रेट करते हैं, बोन को, ब्रेन को, मेनिंजीज को, CSF को, इवन गम्स में, स्किन में, स्टीयर्स में, सलाइवा में, हर जगह पेनिट्रेट करते हैं. ठीक है, तो जो स्पेसिफिकली मिनोसाइक्लिन है, दैट इज़ एक्टिवली अवेलेबल इन आर सलाइवा, स्वेट एंड टीयर्स. तो जो भी मेनिंजोकॉकल डिजीज़ को कैरी करते हैं, दे ट्रांसमिटेड थ्रू देयर स्वेट और देयर सलाइवा. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, इफ देयर कैरियर्स, देयर गिवन मिनोसाइक्लिन बिकॉज दैट कैन kill the bacteria while it's in the saliva. इसके अलावा a combination of minocycline and doxycycline are enter the CSF and the endolymph of the ear specifically. ठीक है, this is just something I wrote down, so I thought I'd share it with you too. Okay, now coming to like the most important part is the side effects. So side effects, there's a lot of them, but oh my goodness, but I feel like the most important, like the what the fuck, एक मिनट,